Okay, so now we were going to see these stuffs. So let us quickly see the relationship operator in action. So let's say we say v1 is equals to 21, and let's say v2 is equals to, let's say, 35. Okay, and next, what we are going to do, see, this is what we are using. We are using assignment operator. Now, once assignment operator is used, we are going to see the relationship operator. So let's say v1 equals to v2. I get a false value. That means v1 is not equals to v2. Let's say v1 is greater than v2. v1 एक variable है और v2 भी एक variable. It is again saying it's a false. Let's say v1 is less than v2. We are getting a true value. Okay, so this is how the relationship operator actually works when you come up with a value into it. So ये value के साथ इसने काम ऐसा कर दिया. उसके बाद इसमें एक not equals to भी है, that also we can use. v1 not equals to v2 क्या आएगा? Any guesses? v1 not equals to v2, true. They are not equal. अगर equal रहते तो वहाँ पे वैल्यू आ जाता है कि इट इज इक्वल टू. ओके, डन. नाउ assignment, next is what we can see is we have already seen most of the relationship operators. Assignment operator we have seen equal to, plus, equal to, minus. यहाँ पे there is one small thing, like when you say plus equals to, so that means x is, I mean, say, see this one. So when I say like this, कोई सा भी एक वैल्यू उठा के देखते हैं, एंड व्हेन आई से, लेट्स से अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं ना, x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. इसको हम x से भी लिख सकते हैं, x प्लस equals to y. So obviously when you write in terms of this, वो ऐसे हो जाएगा x plus equals to y. So this is same as saying x is equals to x plus y. So either you write this or you write this. Both are the same thing. So this is what this operator is being used. उसी तरीके से प्लस इक्वल टू के साथ माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है, डिविजन इक्वल टू है, मॉडुलस इक्वल टू है, और वो तो आपका क्या नाम है, दैट इज एक्सपोनेंशियल इक्वल टू. So these are the exponential, and this is to convert it into a floor division. Now and then once assignment operator वाला था logical operator. So there are three logical operators, and or not. So and or not basically and यूज होता है to combine, दो को combine करके देखने के लिए कि दो वैल्यू combine करके देख रहे हैं तो is if both the conditions are true, आगे बढ़ो. and is both the condition true, और दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, आप आगे बढ़ जाओ. और नॉट इज लाइक कोई भी एक ऑपरेटर ट्रू होना चाहिए, अगर कोई भी ट्रू नहीं होना चाहिए तो आगे बढ़ जाओ. सो लेट मी क्विकली शो यू दिस. यहाँ पे हम दिखाते हैं, लेट्स से हमने v1 और v2 बोला हुआ है, v1 और v2 बोला हुआ है, तो लेट्स से हम यहाँ पे बोलते हैं v1 multiply equals to v3. ठीक है, so this is same as saying v1 is equals to v1 multiplied by v2. करेंगे, परेशान कर देता है, बट एनीवेज v1
is equals to v1 multiplied by v2. Now v1 का वैल्यू क्या हो गया 735. Okay, we could say the same thing as v1 plus equals to v2. Sorry, v1 multiply equals to v2. So this having the same result, v1 equal to v1 plus v2. Simple. When you say v1, now value is 25725. So that is how it is done. So at times there might be some spaces or something coming here जिसकी जल्दी रन नहीं कर रहा है, but that is how it is done. A1 is equals to 4, A2 is equals to 5. If I say A1 equals to A1 plus A2, so that means A1 should have 9. Now already 9 है, A2 में 5 है. Same चीज़ हमको अगर देखना है तो what I will say, A1 plus equals to A2. Simple. Now A1 should be 9 plus 5, 14. Okay, so I hope this is clear. So you can use all these operators like this. Exponential operator can also be used like this, not an issue. Now we are coming with a logical operator. Logical operator is just to combine two or more than two values, and then it gives you a true or false value. So we will see going forward how exactly we can use this logical OR operator. I can show you, true and true will always be true. True and false will always be false. ठीक है, उसी तरीके से ट्रू और ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा. बट इवन इफ आई से ट्रू और false, it will again be true. Why? Because or find for one true condition. So एक भी ट्रू कंडीशन मिल गया तो वो आ जाएगा आपका वैल्यू. Okay, so this is how you can do it. And or not, same way you can do not. Not is just to negate the output, उल्टा कर देता है output. Done. Now once we are completed with logical operators, now let us see identity operators. What are identity operators? So identity operators are operators they are used to determine whether the value of a variable is of a certain type or not. Type num1. So identity operator में दो है, is है और is not है. is tries to find कि वो उस तरीके का है कि नहीं, और is not again वही सेम, वो उल्टा करके फाइंड करने का कोशिश करता है कि जो भी है उसको निगेट करके वैल्यू यूज किया जाए. ओके, सो लेट अस क्विकली सी, एक करके देख लेते. सो लेट्स से हमने v1 एक वैल्यू डाला हुआ था. सो v1 में वी हैव यूज्ड a1 एंड v1 एंड ऑल दैट, तो हम a1 ही को यूज़ करके देख लेते हैं. तो लेट अस सी, टाइप हमने एक फंक्शन पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो टाइप a1 is int. Let us see whether it is int or not. An expectation indentation. Okay जी, type a1 is int true. एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि शुरुआत में मैं स्पेस दे देता हूँ ना, तो यहाँ पे उसको लग रहा है कि इंडेंटेशन हो रहा है, तो वो फिर वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम गड़बड़ कर देता है. सो वी विल सी व्हाट इज दिस इंडेंटेशन है जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. सो टाइप a1 इज इंट, इज हम यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स कि वो इंटीजर है.
और अगर नॉट रहता तो इज नॉट हम यूज कर सकते थे, तो भी ऐसे वैल्यू आता इज नॉट इंट फॉल्स, इट इज इंट, तो वो अपोजिट करके दे रहा है, इज नॉट इंट फॉल्स दैट मीन्स इट इज इंट. Okay, so now we are done with this. Logical operators, membership operators, this we have already done. Now let's move to next slide, which says membership operator. Membership operator I use to check if a value is a member of a given sequence or not. In not, वो is or is not था, यहाँ in or in not है. Let's say I have a dictionary or a string or a list, whatever. So let's say I created a value a is equals to 1 2 3, and then I am trying to understand 2 in a, is this value exist in this variable. अगर होगा तो बोलेगा true, नहीं होगा तो बोलेगा नहीं. जैसे let's 1 in a false. अब 1 तो यहाँ पे है, लेकिन ये होने के बावजूद ये बता रहा है कि नहीं. वाई? बिकॉज दिस इज अ सिंगल कोट्स. इसने बताया कि ये स्ट्रिंग को खोजो, तो स्ट्रिंग तो है नहीं ना, दिस नंबर. तो अगर हम नंबर बोलते तो वो बताता है कि हाँ वहाँ पे है. सो दैट इज हाउ मेंबरशिप ऑपरेटर एक्चुअली वर्क्स. लेट्स सी क्विकली. then I say I will just create 1 4 in a true, 5 in a false. So that is how it actually works. So this membership operator in and in not, और इसके पहले हमने पढ़ा था identity operator is or is not. Okay, now this is Python operator precedence. This is how, अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर आपने लगा रखा है एक लाइन के अंदर, तो दिस इज हाउ इट विल एक्चुअली स्टार्ट. सबसे पहले एक्सपोनेंट आता है, फिर यूनरी ऑपरेटर्स आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर, वो सब आते हैं, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर वी विल सी अदर्स. लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, बिटवाइज क्या होता है. सो दिस इज फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस. मोर और लेस बोर्ड मास रूल कहीं ना कहीं फॉलो होता है विद द बेसिक ऑपरेटर्स. बेसिक ऑपरेटर्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसके पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बीच में फ्लोज, डिवीजन, मॉडल्स आ जाते हैं. That is, it follows. Okay, so going to the next slide. Now we are coming to more deeper understanding of programs. So what is a statement? A statement is a unit of code. A statement is a unit of code that Python interpreter can execute. So now we will see what are different. So exactly हम जो भी line अभी लिख रहे थे, they are all statements because they are all executed by Python interpreters. Now two very important concept which is coming right now is input and output. These are two very important function which actually helps in understanding in you know in executing whatever we want. और इसमें जो फंक्शंस, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. एक तो प्रिंट हम पहले से भी देखते भी आ रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनपुट. सो इनपुट का जो सिंटैक्स है वो सिंपल सा है. इनपुट क्या वैल्यू स्ट्रिंग दिखाना है, तो दिस विल शो द वैल्यू. अगर आप जैसे इनपुट इंटर योर नेम, सो दिस मैसेज इज शोन ऑन द स्क्रीन एंड इट विल क्रशर विल वेट कि आप कुछ डालिए, कुछ इंटर कीजिए. सो जब भी आपको कोई यूज़र इनपुट लेना है तो आप इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं और उसके अंदर डालते हैं कि क्या यूज़र को देखना चाहिए, और डाल के और जैसे ही आप आगे प्रोग्राम लिखते हैं तो इट विल जस्ट वेट, और जो भी आप डालते हैं वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाता है. ओके, सो these are two functions which basically works here. Now
यहाँ पे अगर हम इसको कराना चाहें तो यहाँ पे भी हम करा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज़ एन आइडियली एंड देन वी कैन डू अ प्रोग्रामिंग एंड देन उसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, फाइल न्यू, मैंने बोला प्रिंट, एक तरीका ये है, पहले प्रिंट यूज़ कीजिए, फिर बोलीजिए योर नेम, and let me go by the way we are using. So let's say I am saying I name is equals to input, enter your name. So what this will do, this will ask the user to input their names. एक कोलोन भी दे देखने में अच्छा लगेगा, और जो भी वो डालेगा वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. बट सिंस आई एम नॉट राइटिंग फाइल ओवर हियर, so it will not work it out. So whatever I write, so when I say I name दिखा दो, it will say I name के अंदर slash है. Since I'm not writing a program, so I may write a program and then we can execute it. Okay, fresh enough. Chill. Now once these small functions are done, input your input and print is used, this sequence actually comes to almost to the end of the session. Now this is clear. Now we will see I will be creating a separate video with a lot of functions there, जहाँ पे बहुत सारे programming हम करेंगे, which is the end of the chapters. अब देखो, Python uses print function to output data to standard output device. So we have already seen it. Print का जो syntax होता है वो print value डालिए, क्या string दिखाना वो डालिए, और लास्ट में आप एक बता सकते हैं कि end किससे करना है. डिफ़ॉल्ट वो end इसी से करता है. Like I will say print hello, it will print hello. I will say print 10 multiplied with 3.5, it will say 35. I will say print I plus love plus my plus country, so it will say I love my country. अब यहाँ पर स्पेसेस नहीं आ रहा, देखिएगा ध्यान से, क्यों? बिकॉज हमने यहाँ स्पेसेस नहीं दिया. अगर हम स्पेसेस यहाँ नहीं देंगे तो आउटपुट में स्पेसेस नहीं आएगा. Then print I am 16 years old, it will print I am 16 years old. So if you're giving a space here, it will come here. If you're not giving a space, it will not come. Simple. Now, before going to the third program, so what is type conversion? So type conversion normally is done by Python on its own. खुद से करता है वो, और कुछ में होता है जिसमें हम बोलते हैं करने के लिए. दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. बहुत से टाइम पे क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू किसी एक फॉर्मेट में नहीं है और उसको हम किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज़ करना पड़ेगा और हम बताना पड़ेगा कि आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए इस डेटा टाइप में. तो वो पाइथन खुद से उस डेटा टाइप में वो कन्वर्ट कर देगा बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. बट अगर हमने नहीं बताया तो एट टाइम्स वो एरर भी दे सकता है अगर वो कन्वर्जन गड़बड़ हो रहा है तो, अगर वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो. और दैट इज व्हाट, और नॉर्मली फ्लोट टू इंट कन्वर्जन, इनटू फ्लोट कन्वर्जन, इस तरीके के कन्वर्जन पाइथन खुद से कर लेता है. दैट वी कॉल इट implicit conversion, that is done by Python on its own, so we do not need to specify. But at times अगर int से string में कन्वर्ट करना है, string से int में कन्वर्ट करना है, तो we need to use explicit conversion. explicit conversion हम मेंशन करते हैं और उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं.
Now if I actually want to show you quickly, let me show you. यहाँ पे सपोज कीजिए हमने वही वाला वैल्यू यूज़ किया, आई से n1 इज इक्वल्स टू इनपुट and I say number one and it is asking for number one n1 में, ठीक है. I say 21, ठीक है, and then I say n1 plus 5. I am going to get error. Why? Because ये जो input है ना, ये जो वैल्यू लौटाता है that gives you a string value. So अब हमें n1 में अगर कुछ करना है चेंजेस, तो हमें n1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तभी हम उसमें कुछ काम, सॉरी इंटीजर में, तभी हम काम कुछ कर सकते हैं. तो हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए ये बोल सकते हैं कि n1 इक्वल्स टू इंट ऑफ n1. सिंपल. n1 में अब जो नया वैल्यू डालो उसमें क्या करो कि n1 में जो भी है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो. दिस इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. सो एक मिनट फिर से ट्राई करेंगे. n1 इक्वल्स टू इंट ऑफ n1. दिस हाउ इट इज डन, ठीक है. नाउ अगर हम बोलेंगे n1 में 5 जोड़ दो, तो इट विल जस्ट ऐड 5 एंड इट विल शो में 26. सो दिस इज बेसिकली यूज. यहाँ पे तो ये स्पेस दे दिया था और ब्रैकेट यहाँ कर दिया, दैट वाज रॉन्ग. सो इंट के अंदर दिस इंट फंक्शन इज यूज एंड इट इज वेरिएबल इज पास कि इस वाले वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट करके वैल्यू यहाँ स्टोर कर. डन. सो दिस इज द कन्वर्जन पार्ट which happens. And finally the debugging aspect. Debugging aspect is, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम रन कराया तो उसमें एरर आ गया. देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या एरर आ रहा था या क्यों आ रहा था. हमने उसको ठीक करके फिर से रन कराया. सो डिबगिंग इज फाइंडिंग द मिस्टेक्स एंड रिमूविंग इट. तो मिस्टेक्स कैन हैपन while writing source code and hence the program may not execute or may generate a wrong output. So the process of identifying and removing such mistake is known as debugging. So what we are trying to do, we are removing the bugs, we are removing the errors, and that is called debugging. एरर कैसे हो सकते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. सिंटैक्स एरर जो उसके फॉर्मेट में है वो मैंने नहीं किया, जिसमें मैंने इनफैक्ट ये सिंटैक्स एरर था. सिंटैक्स कुछ है, मैसेज कुछ और यूज़ कर रहा हूँ. लॉजिकल एरर मैंने अपने कंडीशंस में कुछ गड़बड़ी कर दी है. और रन टाइम एरर जो एबनॉर्मल है, जिसमें एवरीथिंग इज राइट बट मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग द वे इट शुड बी. So that is called runtime error. So these are 3 types of errors which actually happens. So this is debugging for you. So this is, we are at the end of the chapter 1. So next video will come and have detail of the exercise. And do like and subscribe and ensure that आप हमें motivate करें. अगर आपको पसंद आया वीडियो और ऐसा वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, कमेंट करें. We will be happy to answer it. And see you in the next video. Till the time, take care, goodbye, Shabba Khair, Shubh Ratri, Vande Mataram.